Article 21 and prisoners right. ठीक है. So as I already told you guys that Article 21 has extensively been used to improve the criminal procedure. So Article 21 has been extensively used so far as illegal detention is concerned, or rights of under trial prisoners are concerned, or making stringent rules about solitary confinement. Okay, so there was a lot of public interest litigation that actually led to the development of all this law. Okay, so Article 21 and prison rights, there are a lot of important judgments which have laid down important criminal safeguards, which have later on also transpired into full-blown amendments into IPC, CRPC, and the evidence law. Okay, so Article 21 and prisoners' rights, there are some headings that we're going to see. The first one is right to free legal aid. Okay, right to free legal aid. I hope you already know that Article 39A of the Constitution, which is our directive principle of state policy, it already says that it is the duty of the court, duty of the state actually, to provide free legal aid to anybody who cannot afford it. Okay, but this has also been held to be a fundamental right under Article 21. तो कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हैं, एमएच हॉस्पॉट वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, हुसैनारा खातून वर्सेस होम सेक्रेटरी बिहार, जहां पे कोर्ट ने कहा था कि राइट टू फ्री लीगल एड टू अक्यूज्ड हु कैन नॉट अफोर्ड लीगल सर्विसेज इज आल्सो पार्ट ऑफ आर्टिकल 21. ठीक है, तो this again, as I said, most of these cases led to important amendments in the Constitution and in the CRPC. So because of this, 42nd Amendment added Article 39A. Okay, 39A, which basically talks about right to free legal aid, but basically puts a responsibility on the state to provide free legal aid. Right? Then we have right to speedy trial. Okay, again, Husainara Khatun was a landmark judgment on the issue of prison rights. इस केस में कोर्ट एक्चुअली looked into the data and found that there are a lot of under trial prisoners. In fact, majority of the prisoners who are imprisoned in the jails are under trials. ठीक है, तो इस केस में कोर्ट ने कहा था कि detention of a person, of an under trial prisoner for an invariably long period of time is also a violation of their Article 21, and that is why right to speedy trial is also one of the fundamental rights. ठीक है. So Sainara Khatun, Kartar Singh, A.R. Antule versus R.S. Nayak, all of these judgments talked about right to speedy trial. Then we have right to fair trial. Of course, right to speedy trial also includes right to fair trial. This was held in the best bakery case, that is Zahira Habibullah versus State of Gujarat. Okay. Then we have another important right, that is right to open trial. ठीक है, हमने I think पहले भी कहीं पढ़ा है कि courts are supposed to be open. Okay, open court का मतलब होता है कि the proceedings of the court are accessible to everybody. ठीक है, इसका मतलब है कि so that it serves a lot of purposes. First of all, it serves the purpose of being transparent. It serves the purpose that people should be aware of the judicial process, and it also puts the responsibility on the judges to act fairly. Okay? So right to open trial is also a part of Article 21. This was held in Naresh Mirashkar versus State of Maharashtra, Sahara versus SEBI, etc. ठीक है, फिर हम आते हैं राइट टू बेल पे. ठीक है, राइट टू बेल आई थिंक इट हैज बीन इम्पोर्टेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ, क्योंकि राइट टू बेल पे recently the last 2-3 years में there have been a lot of judgments. ठीक है, especially in preventive detention cases जहां पे court preventive detention के laws के अंडर भी अब bail दे रहे हैं. ठीक है, so right to bail is also a fundamental right. इसका मतलब ये नहीं है कि people who are imprisoned they will always have the right to claim bail. ठीक है, but refusal to grant bail should be on reasonable grounds. Okay, if it is not on reasonable grounds, then it will also violate Article 21. ठीक है, so right to bail वाला तो I think is also very contemporarily relevant and will continue to do so. Right. Then we have one more finding. State of MP versus Ramkrishna Balotia में कोर्ट ने कहा था कि even though right to bail is a fundamental right, but nobody can claim anticipatory bail to be a part of right to life. ठीक है, मतलब it is a statutory right if you are eligible for it. If the court in its discretion feels that anticipatory bail should be granted, then they can, but nobody can claim it as a matter of fundamental right. ठीक है, फिर आपका DK बसु का केस है, which is a landmark case on custodial violence. ठीक है, फिर दीना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में कुछ लोगों ने चैलेंज किया कि डेथ बाय हैंगिंग इज वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 21. ठीक है, सो दे वर ऑफ द ओपिनियन कि
even though death penalty is constitutional, but death by hanging is a cruel method of execution. So they were basically opposing those principles of CRPC, which basically provide for this method of execution. तो दीना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में कोर्ट ने कहा था कि डेथ बाय हैंगिंग इज नॉट वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 21 एंड इट इज अ फेयर प्रोसीजर. देन वी हैव अ सेपरेट jurisprudence जो आपने टॉर्ट्स में भी ज्यादा अच्छे से पढ़ी होगी, दैट इज राइट टू क्लेम डैमेजेस. ठीक है, आर्टिकल 21 में मॉनेटरी कॉम्पेंसेशन इज इनहेरेंट. ठीक है, सो इफ देयर इज एनी वायलेशन ऑफ एनी राइट बाय द स्टेट, then the person is entitled to monetary compensation as well. ठीक है, इसमें बहुत सारे जजमेंट्स हैं, आप जनरली वो टॉर्ट लॉ में पढ़ते हो जब आप स्टेट लायबिलिटी पढ़ते हो. ठीक है, सो नीलबती बेहरा वर्सेस स्टेट ऑफ ओडिशा, एंड देयर आर रुदुल शाह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, and I don't know, there are a lot of judgments in which state responsibility and the responsibility to damages and compensation have also been laid down. ठीक है. Now we come to procedure established by law. ठीक है, ये आई थिंक हमने कल की क्लास में भी डिस्कस किया था, wherein we talked about कि how this term has been taken from the Japanese constitution and how it has a very similar meaning as to the concept of rule of law. ठीक है, rule of law बात करता है, sorry, not rule of law, but due process of law. ठीक है, due process of law, which is a term which has been taken from the US constitution. ठीक है, तो early cases में, as I said, the court was of the opinion कि procedure established by law का मतलब होता है any procedure that the law has established. ठीक है, later on we of course got to understand कि it is not enough that the legislature has laid down a procedure. It is also important to see what kind of procedure is it. ठीक है, we have already seen the test कि whether it is just, fair, reasonable, non-arbitrary or not. ठीक है, तो A.K. Gopalan versus State of Madras में court interpreted this term very narrowly and they said कि procedure established by law does not have the same meaning as due process of law. okay? तो उनका कहना था कि procedure established by law का इतना सा मतलब होता है that the procedure should be laid down by the law. Whether that procedure should satisfy the principles of natural justice or not, that is not required. ठीक है, तो A.K. Gopalan में, as you can see, there was a very restrictive approach that the court had taken. Yeah. Later on in Menka Gandhi, they overruled this understanding of A.K. Gopalan and they said that mere prescription of procedure is not enough for Article 21. We will also have to see whether this procedure satisfies the conditions of principles of natural justice or not. ठीक है, ठीक है, उन्होंने क्या क्या बोला ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. That the procedure must be just, fair and reasonable and not arbitrary, fanciful or oppressive. ठीक है, इस केस में कोर्ट ने ये भी बोला था कि principles of natural justice must be taken into account under Article 21. ठीक है, मिट्टू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब भी हम डिस्कस कर चुके हैं जब हम डेथ पेनल्टी वाले केसेस देख रहे थे, जहां पे कोर्ट ने कहा था कि सेक्शन 303 ऑफ आईपीसी which prescribes for mandatory death penalty to life convicts who commit murder in the prison, that is unjust, unfair and a harsh procedure. ठीक है, कोर्ट ने ये भी कहा था कि it is violative of Article 14 because it is creating a very unreasonable classification. ठीक है, so Mithu versus State of Punjab, a very important judgment. ठीक है, so this basically brings us to the end of Article 21. I hope you have by and large understood the meaning of different terms. ठीक है, I hope you understand right to life, right to personal liberty, and in what manner can they be restricted. ठीक है, so basically the understanding of what is procedure established by law. ठीक है, बाकी जितने हमने cases देखे, they are the landmark cases. There could be a lot more and also, but I think for understanding the basics, this much is enough. बाकी आप mocks वगैरह में जब भी attempt करोगे, तो you will get to probably get to know a few more cases on Article 21. ठीक है, अब if anybody has any doubt in this, do let me know. Otherwise, I'll quickly start with Article 22 and we'll finish Article 22 today and that is when we'll stop. Okay. See, Article 22 is important. जब हम अगर cases देखेंगे preventive detention laws के, तो that will be quite interesting to see. ठीक है, क्योंकि आजकल काफी सारे judgments आ रहे हैं on preventive detention, on granting bail under preventive detention laws. So that might be important for the exam, but
अभी वी आर ओनली सपोज टू अंडरस्टैंड आर्टिकल 22. तो आर्टिकल 22 का बेयर एक्ट आई थिंक हमने लास्ट क्लास में देखा था. इट्स क्वाइट इजी, राइट. 22(1) एंड 22(2) ये जो दो आर्टिकल्स हैं, ये आपको बेसिक सेफगार्ड्स बताते हैं अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन. ठीक है, क्या बताते हैं? दे बेसिकली से दैट नो पर्सन कैन बी अरेस्टेड और केप्ट इन कस्टडी विदाउट बीइंग इन्फॉर्म्ड of the grounds as to why they are being arrested. Secondly, they have the right to consult and be defended by a legal practitioner of their choice. ठीक है. 22(2) बोलता है कि अगर आपने किसी को अरेस्ट किया है तो आपको उसको नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास सबमिट करना पड़ेगा, प्रेजेंट करना पड़ेगा विद इन 24 आवर्स. ठीक है, इन 24 आवर्स में ट्रैवल टाइम इज नॉट इंक्लूडेड. ऑलराइट, तो हमने देखा कि ये जो दो फंडामेंटल राइट्स हैं, दे आर ऑल्सो स्पेसिफाइड इन द सीआरपीसी. ठीक है, सीआरपीसी में भी सिमिलर राइट्स हैं. आपने अगर अच्छे से पढ़ा अरेस्ट वाले सेक्शन, वहां पे क्लियरली लिखा हुआ है 41 ए बी सी डी में कि आपने जिसको भी अरेस्ट किया है आपको उसको ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट बताने पड़ेंगे. यू विल हैव टू इन्फॉर्म अबाउट हिज अरेस्ट टू हिज फैमिली और फ्रेंड्स और whoever he names that. ठीक है, he must be given right to consult a lawyer. They should be presented before the nearest magistrate, etc. ठीक है, तो ये जो भी हमने यहाँ पे देखा, they are also statutory rights. ठीक है, they are constitutional rights, are fundamental rights, and they are also statutory because they are given in CRPC. फिर हमने देखा कि 22(3) जो है वो 22(1) और 22(2) के प्रोटेक्शन से कुछ कैटेगरीज को एक्सक्लूड करता है. ठीक है, वो बोलते हैं कि ये दो जो प्रोटेक्शन हमने देखे, they will not apply to enemy aliens and to anybody who is arrested or detained under any law providing for preventive detention. ठीक है, preventive detention क्या होती है? मतलब the person has not really committed a crime yet, but you apprehend him beforehand thinking that he will commit a crime. ठीक है, so that is what they are saying. If somebody is arrested under such kind of laws, then they will not be given the protection of this and this. ठीक है, which in essence means that anybody who is arrested or detained under any preventive detention law has lesser rights than people who are arrested under your regular laws. ठीक है, फिर हमने देखा 4, 5, 6, 7 में, मैं वापस से रिपीट नहीं करूंगी क्योंकि हम बैराक देख चुके हैं. 4, 5, 6, 7 आपको बताते हैं कि कौन से सेफगार्ड्स अप्लाई होंगे इनके केस में. ठीक है, तो वो बताते हैं कि ठीक है, दे विल बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द ग्राउंड्स एज सून एज पॉसिबल. दे विल बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी फॉर रिप्रेजेंटेशन. अगर अरेस्टिंग अथॉरिटी को लगता है कि ग्राउंड्स नहीं बता सकते बिकॉज इट विल गो अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट, तो दे कैन नॉट डिस्क्लोज द ग्राउंड्स ऑल्सो. ठीक है, फिर 22(7) बताता है आपको कि किस केस में पार्लियामेंट जो 3 मंथ्स का बेसिक आपका अरेस्ट पीरियड है उसको कब कब एक्सटेंड कर सकती है. ठीक है, फिर हमने देखा कि देयर इज ऑलरेडी एन अमेंडमेंट, दैट इज द 44th अमेंडमेंट व्हिच हैज चेंज्ड आर्टिकल 22(4) टू 22(7. ठीक है, बट दैट चेंज हैज स्टिल नॉट बीन नोटिफाइड. यानी कि ये जो सेक्शन 3 है 44th अमेंडमेंट एक्ट का, वो अभी तक नोटिफाई नहीं हुआ है. मतलब उसकी एनफोर्समेंट डेट सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी तक नोटिफाई नहीं की है. तो दिस हैज स्टिल नॉट कम इनटू ऑपरेशन. ओके, तो अभी हम जो भी देखेंगे इसके अंदर, वी आर लुकिंग एट द ओल्ड पोजीशन. ओल्ड इन द सेंस दैट इज देयर बिफोर द 44th अमेंडमेंट. ठीक है, बट even then it is the current position because this amendment has not been notified. So now let's quickly see about article 22. article 22 में से ज्यादा कुछ नहीं समझने का. आपको थोड़े बहुत प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज पता होने चाहिए कि कौन से प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज इंडिया में अभी तक इनैक्ट हुए हैं. एंड या दैट इज बेसिकली. ठीक है, हम एक बार अलग से प्रिवेंटिव डिटेंशन का टॉपिक लेंगे जहाँ पे हम लॉज देखेंगे थोड़े बहुत, जहाँ पे हम जजमेंट्स देखेंगे, राइट टू बेल देखेंगे एंड ऑल ऑफ दैट. ओके, yeah, so article 22 provides 2 important rights. One is okay, not here. Article 22 provides procedural safeguards against arrest and detention in 2 cases. ठीक है, पहला जब ordinary law के अंदर anybody has been arrested or detained. दूसरा when the detention is under the preventive detention law. ठीक है, preventive detention law वाले जो provisions हैं वो 22(4) to 22(7) में है. एंड जो फर्स्ट केस वाले सिनेरियोज हैं वो 22(1) और 22(2) में है. ओके, अब 22 इज अवेलेबल टू ऑल पर्सन. ठीक है, सिटीजंस, नॉन सिटीजंस, एवरीबडी इट इज अवेलेबल टू. हाउएवर इट इज नॉट अवेलेबल टू एन एनिमी एलियन. ये क्लियरली बेयर एक्ट में लिखा हुआ है 22(3) में कि ये जो प्रोविजंस है ये एनिमी एलियन पे अप्लाई नहीं होंगे. ठीक है, आर्टिकल 22 सिविल मैटर्स पे अप्लाई नहीं होता है. ऑफ कोर्स ओनली अप्लाइज टू क्रिमिनल मैटर्स. अगर आप आर्टिकल 22 पढ़ोगे
तो आपको अपने आप रियलाइज हो जाएगा कि वो अरेस्ट और डिटेंशन की बातें कर रहे हैं, ठीक है। और सिविल केसेस में अरेस्ट और डिटेंशन नहीं होता है, कुछ केसेस में अरेस्ट के प्रोविजंस हैं, बट दैट इज नॉट रियली अ क्रिमिनल अरेस्ट, ठीक है। अब हम आते हैं सेफ गार्ड्स पे, ठीक है। ये सारा आपके बेयर एक्ट से, ठीक है। क्या क्या, राइट टू बी informed, right to be informed of the grounds of arrest and detention. That is the first safeguard. Then we have right to consult and be defended by a lawyer of own choice. Right to be produced before the nearest magistrate within 24 hours of arrest, and right not to be detained in custody beyond 24 hours. ठीक है, ये सारा हम already देख चुके हैं. It can be inferred just from the reading of the Bare Act. Okay. 22(3) दो exceptions carve out करता है. Enemy alien and somebody who's arrested under the preventive detention law. Okay. ठीक है. अब प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है? ठीक है, प्रिवेंटिव डिटेंशन, एज द नेम इन इटसेल्फ सजेस्ट, इज अरेस्टिंग समबडी और डिटेनिंग समबडी एज अ प्रिवेंटिव मेजर. प्रिवेंटिव मतलब वी आर ट्राइंग टू प्रिवेंट दिस पर्सन फ्रॉम कमिटिंग अ क्राइम. ठीक है, तो ऐसे केसेस में जहां पे दे डू नॉट हैव यू नो sufficient evidence to charge a person with conviction, but they have enough material to apprehend that the person is going to commit a crime. In that case, preventive detention laws basically function. ठीक है, different type के laws हो सकते हैं. अभी हम कुछ examples देखेंगे कि इंडिया में कौन कौन से preventive detention laws अभी तक enact हुए हैं. ठीक है, objective of preventive detention act, as you can understand, is not to punish somebody. ठीक है, it is to prevent the person from doing something prejudicial. ठीक है, तो प्रिवेंटिव डिटेंशन का काम पनिश करना नहीं होता है. इट इज विद द इंटेंशन ऑफ प्रिवेंटिंग समथिंग फ्रॉम हैपनिंग. ठीक है, अब आपको समझ आ रहा होगा देख के कि ये प्रॉब्लमैटिक क्यों है. ठीक है, प्रिवेंटिव डिटेंशन इसीलिए प्रॉब्लमैटिक है क्योंकि इफ somebody has not committed a crime yet, if you're not arresting them because you have evidence that they have committed a crime, then in that case what evidence do you really have? ठीक है, तो जो डिग्री ऑफ एविडेंस है या डिग्री ऑफ सैटिस्फैक्शन है ऑफ द अरेस्टिंग अथॉरिटी, दैट इज वेरी सब्जेक्टिव, राइट? क्योंकि आपके पास एक्चुअली कोई एविडेंस नहीं है दैट दिस पर्सन हैज कमिटेड अ क्राइम. यू जस्ट बिलीव दैट ही माइट कमिट अ क्राइम. ठीक है, नाउ माइट कमिट अ क्राइम इज वेरी सब्जेक्टिव, and this is why preventive detention laws are the most abused criminal laws, because the whole understanding is to dilute the very idea of the degree of evidence that should be available against a person and what subjective satisfaction an authority should have. ठीक है, तो जो अरेस्ट कर रहा है अगर उसको लगता है कि this person is going to commit a crime, then that is sufficient satisfaction that is required under such laws. And this is why it is problematic, because it is prone to abuse by persons who are in authority. ठीक है, अब प्रिवेंटिव डिटेंशन का जो टॉपिक है, जो सब्जेक्ट मैटर है, that falls in list 3 entry 3, यानी कि concurrent list का टॉपिक है, which means both the state and the union can make laws on that. ठीक है, so union and the state can make laws on preventive detention under entry 9 for 7th schedule and list 3 entry 3. ठीक है, list 1 entry 9 में union के पास भी पावर है और list 3 entry 3 में union and state both have the power. Okay, तो आप एक बार इसको याद रख सकते हो क्योंकि preventive detention is a common topic, so you should know कि where exactly does it fall so far as law making powers are concerned. ठीक है, now these are the laws which have been enacted in independent India with respect to preventive detention. ठीक है, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950, ये वाला लॉ जो आया था जिसमें हमने AK रॉय वाला केस भी देखा था. सो दिस लॉ हैज बीन रिपील्ड नाउ, तो दिस लैप्स्ड इन 1969. ठीक है, तो ये अभी फोर्स में नहीं है. फिर आपका मीसा था, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, व्हिच वाज रिपील्ड इन 1977. ये वाला जो लॉ है, प्रिवेंशन ऑफ ब्लैक मार्केटिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ सप्लाईज ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, दिस इज स्टिल इन फोर्स. ठीक है, आपको याद रखना है कि दिस लॉ, द थर्ड लॉ, is still in force. National Security Act 1980 still in force. टाडा यानी कि टेररिस्ट एंड डिस्ट्रप्टिव एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट,
ये 1987 में आया, 1995 में लैप्स हो गया, सो ये दिस इज नॉट इन फोर्स, ठीक है। देन वी हैव प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट यानी कि पोटा, दिस हैज आल्सो बीन रिपील्ड, एंड वी हैव यूएपीए यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967, ठीक है। इसमें 2012 में बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हुए थे एंड दिस इज स्टिल इन फोर्स, ओके। तो हमने देखा देयर आर 3 इंपॉर्टेंट प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज व्हिच आर स्टिल इन फोर्स इन इंडिया, दिस वन एंड दिस वन, ठीक है। सबसे इसमें से अनपॉपुलर है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, क्योंकि मोस्ट ऑफ द अरेस्ट दैट टेक प्लेस अंडर दिस fall under either this or the NSA, National Security Act 1980, ठीक है। Okay. अब हम आते हैं एक और छोटे टॉपिक पे, दैट इज द टॉपिक ऑफ जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। सॉरी, ओके। सो नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड कि प्रिवेंटिव डिटेंशन के केसेस में जुडिशियल रिव्यू कितना अवेलेबल है, ठीक है। यानी कि इफ एनी अथॉरिटी व्हिच हैज बीन एम्पावर्ड अंडर लेट्स से द यूएपीए एक्ट और द एनएसए और द ब्लैक मार्केटिंग एक्ट, तो अगर वहां पे इफ दे हैव अरेस्टेड समबडी और इफ दे हैव डिटेन्ड समबडी, तो क्या आप कोर्ट जा सकते हो फॉर द जुडिशियल रिव्यू ऑफ दैट अरेस्ट ऑर्डर, ठीक है। तो हम इस सेक्शन में देखेंगे कि कोर्ट ने क्या ग्राउंड्स ले डाउन किए, ठीक है, कि जुडिशियल रिव्यू प्रिवेंटिव डिटेंशन ऑर्डर्स का किन केसेस में हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड नहीं है कि इन्हीं केसेस में जुडिशियल रिव्यू विल बी डन, ओके। रीजन बीइंग कि हमने देखा प्रिवेंटिव डिटेंशन इज वेरी सब्जेक्टिव, राइट। प्रिवेंटिव डिटेंशन में अथॉरिटीज का जो सेटिस्फैक्शन है बहुत सब्जेक्टिव होता है, ठीक है। तो ऐसे कोई ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड्स नहीं है कि अथॉरिटी ने अगर ये प्रोसेस फॉलो नहीं किया तो वी विल गो अगेंस्ट जुडिशियल रिव्यू एटसेट्रा, ठीक है, because it is very subjective in nature, so it's very hard to lay down any objective standard for preventive detention orders, ठीक है। किन किन चीजों से या किन किन फैक्टर्स से हम ये डिड्यूस कर सकते हैं कि अथॉरिटीज का जो सब्जेक्टिव सेटिस्फैक्शन है दैट इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनली करेक्ट। इसका मतलब है कि किस केस में अथॉरिटी ने सही से या फिर लीगली एक्ट नहीं किया है, ठीक है। ऐसे कौन से सर्कमस्टांसेस हैं? मैलिफाइड यानी कि बैड फेथ, नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड यानी कि अथॉरिटीज ने अरेस्ट करते टाइम या डिटेन करते टाइम दे हैव नॉट अप्लाइड एनी माइंड टू द फैक्ट्स ऑफ द केस, या फिर बेस्ड ऑन इररेलेवेंट ग्राउंड्स, ठीक है, कि उन्होंने कुछ ग्राउंड्स तो मेंशन किए हैं एज टू व्हाई दे आर अरेस्टिंग द पर्सन बट दोस ग्राउंड्स आर इररेलेवेंट, ठीक है। तो ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं ऑन विच जुडिशियल रिव्यू ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन ऑर्डर्स कैन हैपन, ओके। मैलिफाइड, non-application of mind and irrelevant grounds, ठीक है। So non-consideration of a material fact and non-application of mind may also lead to quashing of orders of preventive detention, ठीक है। अब preventive detention के लिए भी आपको you will have to follow the procedure established by law, ठीक है। ऐसा नहीं है कि preventive detention में आप किसी को भी अरेस्ट कर सकते हो, जो लॉज में ले डाउन है, जो एनएसए में, यूएपीए में and the black marketing act, what they actually lay down is the procedure established by law, ठीक है। So if an arrest happens outside that procedure or not following that procedure, then that will violate Article 21, okay? हाँ, ठीक है ना। अब ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, 44th amendment has made important changes to Article 22, but this has not been notified yet, ठीक है। AK रॉय के केस में in the year 1981 ये जो अमेंडमेंट आया था 1978 में आया था, राइट। 1981 के केस में a petition was filed to the Supreme Court asking the court to direct the central government to notify this, ठीक है। तो essentially कोर्ट के पास गए बोलने के लिए कि 1978 से 1981 हो गया है बट ये वाला अमेंडमेंट अभी तक फोर्स में नहीं आया है, so they were asking the Supreme Court to basically direct the central government to notify a date, ठीक है। Supreme Court refused, ठीक है। Why did it refuse? सेपरेशन ऑफ पावर, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी लॉ को इनएक्ट करने का काम या वो लॉ कब फोर्स में आएगा, ये काम एग्जीक्यूटिव फंक्शन है, ठीक है। और कोर्ट एग्जीक्यूटिव को डायरेक्ट नहीं कर सकती टू परफॉर्म एन एग्जीक्यूटिव फंक्शन, क्योंकि वो एग्जीक्यूटिव के डिस्क्रेशन पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो आपने देखा होगा ऐसे कई सारे केसेस है। फॉर एग्जांपल कई बारी सम पीपल गो टू द सुप्रीम कोर्ट सेइंग दैट
direct the executive or direct the legislature to make this law. जैसे I think कल्पना मेहता का केस था जिसमें the parties went and said कि there are a lot of killings going on in the name of protection of cows etc. है ना, बहुत सारी vigilante killings हो रही हैं, तो आप पार्लियामेंट को डायरेक्ट कीजिए कि इस पे एक लॉ बनाए। तो कोर्ट ने मना कर दिया। कोर्ट ने कहा कि लॉ बनाना पार्लियामेंट का काम है, ठीक है, और हम पार्लियामेंट को नहीं बता सकते कि आप कौन सा लॉ बनाओ, ठीक है। सो दैट इज व्हाई दे सेड बिकॉज सेपरेशन ऑफ पावर demands us to not interfere into the functioning of the legislature and this is why we cannot direct them to make a law, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि कोर्ट कभी भी पार्लियामेंट को नहीं बता सकती कि वो कौन सा लॉ बनाए या कब बनाए या कैसे बनाए, ठीक है। सिमिलरली अगर पार्लियामेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी है डेट नोटिफाई करने की, ठीक है, जैसे कुछ लॉज होते हैं उसमें क्या होता है, उसमें डेट ऑफ एनफोर्समेंट दी होती है, ठीक है। जैसे आपने आईपीसी पढ़ा होगा, आईपीसी में दिया हुआ है कि दिस लॉ विल कम इनटू फोर्स ऑन आई थिंक 1 अक्टूबर 6 अक्टूबर, मुझे याद नहीं है, बट आईपीसी की जो एनफोर्समेंट डेट है कि कब फोर्स में आएगा वो आईपीसी में लिखी हुई थी, ठीक है। लेकिन कई सारे ऐसे लॉज होते हैं जैसे फॉर एग्जांपल कंपनीज एक्ट के काफी सारे प्रोविजंस हैं और बहुत सारे लॉज, ठीक है, जहां पे वो ऐसा लिख देते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट विल नोटिफाई in the official gazette as to when this law will come into force, ठीक है। इसको बोला जाता है कंडीशनल लेजिस्लेशन, ठीक है। हम इसको एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में और अच्छे से पढ़ेंगे कि कंडीशनल लेजिस्लेशन किस केसेस में वैलिड होती है, ठीक है। तो कंडीशनल लेजिस्लेशन का मतलब है कि पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव को ये काम डेलीगेट कर देती है कि आप डिसाइड करोगे कि ये जो हमने लॉ बनाया है ये फोर्स में कब आएगा, ठीक है, ये एक्चुअली लोगों पे अप्लाई होना कब स्टार्ट होगा, ठीक है। तो 44th अमेंडमेंट में भी ऐसा था, पार्लियामेंट ने इसकी नोटिफिकेशन डेट नहीं दी थी एंड दे पुट सेंट्रल गवर्नमेंट इन चार्ज कि सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी कि कब इस अमेंडमेंट को फोर्स में लेके आना है, ठीक है। कोर्ट ने इसलिए इस केस में मना कर दिया, उन्होंने कहा कि ये एग्जीक्यूटिव का काम है क्योंकि यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को वो डेलीगेट की गई है पावर एंड दे कैनॉट आस्क द सेंट्रल गवर्नमेंट टू एनफोर्स दिस, ठीक है। वो that is separation of power and they cannot basically tell the government when to bring this into force, okay? So that is your article 22, ठीक है। article 22 पे हम बाद में अच्छे से और डिस्कशन करेंगे wherein we will talk about preventive detention laws, but that will happen during the case law का time, ठीक है। So this concludes article 22 23 24 में कुछ नहीं है, आप एक बार पढ़ लेना, मैं नेक्स्ट क्लास में आपको 10 मिनट में ब्रीफ दे दूंगी। 23 24 इज क्वाइट इजी, ओके। फिर हम आएंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट सेट ऑफ राइट्स पे, दैट इज राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है। काफी इंटरेस्टिंग होगा, काफी अच्छे केस लॉज हैं इस पे एंड दिस इज रेलेवेंट ऑल्सो, ठीक है। काफी सारे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स अभी पेंडिंग हैं जो राइट टू रिलीजन को काफी अच्छे से और डिटरमाइन करेंगे, सो विल हैव टू वेट एंड सी एज टू हाउ द कोर्ट डिसाइड्स इट। देन वी विल बी लेफ्ट विद कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स यानी कि माइनॉरिटीज के राइट्स एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है। तो ये 2 टॉपिक और बचेंगे उसके बाद एंड देन विल बी डन विद फंडामेंटल राइट।